So welcome all. We'll see another examples on finding the step response. So we have the question h of t is equal to e raised to minus 2t multiplied with u of t minus 2. So first we'll write the formula. H of t is equal to integral h of t into dt. So if I put those values here, actually it should be h of tau into d tau. So this will be e raised to minus 2 tau into u of t minus 2 into t2. क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। u ऑफ t माइनस टो दिया है, तो u ऑफ t माइनस टो को अगर हम स्केच करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है हमारा u ऑफ टो हुज एम्पलीट्यूड इज 1 बिटवीन 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और इसको हमें शिफ्ट करना है 2 यूनिट से। सो अगर प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे तो अब सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा 2 से अप टू ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ दिस। तो ये है हमारा u ऑफ टो माइनस 2। क्लियर। तो इस वाले की वैल्यू है इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 बिटवीन 2 टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए लिखेंगे, अभी लोअर लिमिट निकल जाएगा, नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, और अपर लिमिट जो है वो वही रहेगा एज टी ई रेज टू माइनस 2 टो इंटू टी। अब इसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। दिस विल बी ई रेज टू माइनस 2 टो डिवाइडेड बाई minus 2 over the limit 2 to t. Now let's take 1 by 2 as outside term, minus 1 by 2. We'll put upper limit e raised to minus 2 into t minus e raised to, this value is 2, so this will be minus 2 into 2. So the answer will be minus 1 by 2 into e raised to minus 2t into e raised to minus 4. So this will be our step response as s of t. Okay, so this will be our answer. Now in the same manner, let's take another example. As h of t is given in terms of unit impulse function u of t plus 1 minus u of t minus 1. Now we'll find answer of this particular question. So first of all, we'll write the formula s of t minus infinity to t h of tau into d2. This will be u of this value tau plus 1 minus u of tau minus 1 into d2. अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल है, u ऑफ t माइनस टो जो था वो स्टार्ट कर रहा था 2 से, अब u ऑफ t प्लस 1 जो है वो स्टार्ट करेगा -1 से, बिकॉज इट इज शिफ्टेड बाय -1 यूनिट. सो आई कैन राइट फॉर दिस एज -1 to t, दिस वैल्यू इज 1 इंटू डी टो माइनस दिस इंटीग्रेशन, अब ये +1 यूनिट से शिफ्ट हो रहा है, सो इट विल बी 1 to t 1 इंटू डी टो. तो डी टो का इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा टो लिमिट्स -1 to t, और इसका है 1 to प्लस t के बीच में. Now let's put the upper and lower limits. So if I put the upper limit, it will be t minus minus plus 1, ये वाला minus t minus 1. So it will be t plus 1 minus t minus minus plus 1. So this will get cancelled and the step response will be 2. So this will be our answer of second question. So this is how you can find step response of any of the. Thank you.